वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है in association with Neerish Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BDGC 172. Gender Sensitization, Society and Culture. Section A. Answer the following questions. Question number 1. Discuss the term femininity. Do you agree that it plays a significant role in shaping gender roles in everyday life? Explain with the help of suitable examples. Let's discuss the answer. Femininity represent करता है culturally constructed collection को of characteristics such as qualities, behaviors, appearance, attributes, features, postures associated with women. Femininity एक socially constructed और socially produced term है. The gender inequalities persist in India at all levels, जैसे कि sex ratio, literacy, higher education, life expectancy, etc. Gender roles को conceptualize किया जा सकता है as behavioral expectations behaved on biological sex. Traditionally, for women to be masculine, they are expected to display attributes जैसे कि strength, power, and competitiveness. Thus, the roles and responsibilities assigned to them is based on the perceived differences. That is why gender roles are socially constructed. Gender roles obligations influence करती हैं career choice को और commitment to the occupational sphere को. ये role differently reflect करता है in selecting the occupation. The traditional view of feminine gender role prescribe करता है that women should behave in the ways that are nurturing. One way that women might engage in the traditional feminine gender role would be to nurture her family by working full time within the home rather than taking employment outside the home. According to Caroline Moser, women are subjected to triple burden in most of the developing countries. They form three types of roles, that is, reproductive, productive, and community managing and community politics. Reproductive roles जो women द्वारा play किए जाते हैं include करता है child bearing, child rearing, taking care of elders in the family, and domestic household work. The third wave refer करती है continuation को और एक reaction to the perceived failure को of the second wave feminism beginning in the 1990s. Third wave feminists often focus करते हैं micropolitics और challenge को the second wave's paradigm as to what is or is not good for females. Moving on to question number 2. What is the relationship between labor force participation and the economy from a gender perspective? Discuss it with the help of suitable examples. Let's discuss the answer. Discrimination against women or girls एक persuasive और long running phenomena है जो characterize करता है Indian society को हर level पर. इंडिया की progress towards gender equality measure करी जाती है by its position on ranking such as the Gender Development Index has been disappointing despite fairly rapid rates of economic growth. Past decade में जब Indian GDP had grown around 6%, there has been a large decline in female labor force participation from 34% to 27%. For India to maintain its position as a global growth leader, ज़्यादा concerted efforts at local and national level पर किए जाते हैं and by the private sector required है to bring women to parity with men, while increasing representation of women in public spheres ज़्यादा important है and can potentially be attained through some form of affirmative action. All this is represented with the help of a triangle represented in the figure. The Securities and Exchange Board of India had shot off a fresh warning to listed companies to appoint at least one women director on their boards by April 1, deadline failing which they would face regularity action. The market regularity को inform किया गया by the stock exchanges that close to one-third of the top 500 listed companies do not have any women on their boards. Moving on to section B. Answer the following questions.
Discuss the productive and reproductive work concerning gender. Let's discuss the answer. The key challenge for feminist economics raha to make the visible and so-called invisible or unpaid economy. अब हम रीड करते हैं हाउ डू द टू लेबल्ड एज प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव वर्क अफेक्ट करते हैं विमेन के सोसाइटी को इन terms of status. As per the productive work of women, the tendency to highlight an unpaid economic work की एक long standing history है within the debates on gender and development going back to the women in development tradition. Forsberg posted a positive correlation between the role women played in agriculture production as their status was men. On the other hand, जो reproductive work है ये most persuasive theme है of the present feminist movement is the emphasis placed on the role of reproduction as a determinant of women's work, the sexual division of labor, and the subordinate dominant relationship between the women and men. The emphasis किया जाता है reproduction पर and on the analysis of household sphere indicate करता है traditional focus को that is placed upon commodity production is insufficient ये समझने में कि विमेन का वर्क और उसकी रूट पैट्रियार्किक रिलेशनशिप से कैसे डिफर करती है. Moving on to question number 4. Discuss sexual harassment at the workplace within a suitable case study. Let's discuss the answer. वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड करती है एक अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर को जो डायरेक्टली या indirectly imply करता है as given below. A demand or request for sexual favors, physical contact and advances, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical or non-physical, non-verbal sexual nature, sexually explicit emails or SMS text messages. The two key issues जो एसोसिएट होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से वर्कप्लेस पर आर द अनवेलकम जो एनालाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ women's perspective and the conduct should be of a sexual nature which is a basis of gender and denies a promotion but there is no conduct of sexual nature it is not amount to sexual harassment. यहाँ पर कुछ केसेस डिस्क्राइब्ड हैं. फॉर एग्जांपल रुचिका गिरोत्रा's केस. On August 12, 1990, Shambhu Pratap Singh Rathore, a 1966 batch IPS officer and then IG of Haryana, molested Ruchika at the office of Haryana Lawn Tennis Association. He then molested the minor girl when she left alone with him in a room. Moving on to the next question. Discuss the role of mass media and gender in India. मास मीडिया एक ड्राइविंग फोर्स बन चुका है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. इमेजेस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ जेंडर रोल्स को हाईलाइट किया जाता है अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म से और सोर्सेज से जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, एक्टिविटीज, मीडिया, स्कूल सेटिंग, हिस्टोरिकल पैसेजेस और आर्ट पीसेस एंड द वर्क प्लेस. सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली एक हेवीली सेंट्रलाइज्ड टॉपिक है इन मास मीडिया. When these platforms hypersexualize women, portray करता है lack of clothing को और depict करता है women को as subordinate to men, a women's self-esteem, body image और emotional well-being को negatively affect किया जाता है. Later on down the line came the invention of the television. The television would soon replace the radio for the most effective platform to reach the general public. आजकल इंटरनेट एक रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट फॉर्म ऑफ मास मीडिया है और ये एक मेजर टूल बन चुका है नए आउटलेट्स के लिए. Since the evolution of the internet, the general public is able to access the same news outlet in instant with just a click of mouse. और उन्हें वेट भी नहीं करना पड़ता to get aware of the news. Moving on to section C. Write a short note on masculinity. Let's discuss the answer. Masculinity एक form of gender है जो variously defined होती है as an identity, social role and a form of power and is typically though not exclusively associate की जाती है relate करी जाती है men से. In the socialization of masculinity, boys or men are encouraged to reject or avoid anything stereotypically feminine, to be tough, aggressive, suppress emotions, distance themselves emotionally and physically from other men, and strive towards competition, success, and power. In particular में एंटी फेमिनिटी और होमोफोबिया आर द कोर जहाँ पे मैस्कुलिनिटी का ट्रेडिशन मीनिंग को अप्लाई करता है.
बॉयज एंड मेन को रिवॉर्ड किया जाता है इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में, जैसे कि स्कूल्स, इंटीमेट रिलेशनशिप, वर्क प्लेस पर, फॉर अडियरिंग टू दी स्टीरियोटाइपिक एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफर पनिश्ड और रिजेक्टेड फॉर वायलेटिंग देम. Moving on to the next question. What is liberal feminism? Let's discuss the answer. Liberal feminism argue करता है that women और men को must be differentiated रहना चाहिए, not on the basis of their biological imperatives but due to the process of sex role socialization. The sex role socialization ने taught किया women को to become housewife primarily, thus the women could not release their full potential and remain dependent upon their husband. ये एक मेन कॉज रहा ऑफ their subordinate status in front of men. Liberal feminists डिमांड करते हैं equal opportunity for women in all spheres including jobs. Moving on to the next question. Write a short note on triple burden of women. Let's discuss the answer. कैरोलिन मोसर के अनुसार विमेन को सब्जेक्ट किया जाता है टू द ट्रिपल बर्डन इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. वो परफॉर्म करते हैं तीन टाइप के रोल, विच इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी मैनेजिंग एंड कम्युनिटी पॉलिटिक्स. रिप्रोडक्टिव प्ले करता है बाय विमेन, विच जो इंक्लूड करता है चाइल्ड बियरिंग को, रियरिंग को, टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स इन द फैमिली एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड. रिप्रोडक्टिव रोल्स के साथ साथ विमेन साथ में प्रोडक्टिव रोल्स भी परफॉर्म करती हैं by becoming secondary income earners, but their economic activities को include नहीं किया जाता in the system of national accounts. Moving on to the next question. Write a short note on social construction of gender. Let's discuss the answer. सोशल कंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया जाता है एक सोशल प्रोसेस के तरीके से जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस को इंट्रिंसिकली रिलेट किया जाता है. सोशल कंस्ट्रक्शन को शेप किया जाता है और फ्रेम करा जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल. Thus, for survival of a particular form of social construction, the dominant group impose करता है कल्चर को, नॉर्म्स, आइडियोलॉजीज और वैल्यूज ऑन सोसाइटी को. हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अबाउट द सोशल कंस्ट्रक्शन हर जीवन में पीपल को क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, कम्युनिटी, किनशिप, जेंडर एटसेट्रा. Women को आइडेंटिफाई किया जाता है यूनिवर्सली एज द मदर्स विद द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, केयर, सपोर्ट, जबकि मेन की प्रॉक्सिमिटी विद पब्लिक डोमेन कैरेक्टराइज की जाती है इम्पर्सनल और प्रोफेशनल नेचर से, एंड thus they are the products of socio-cultural construction, femininity and masculinity. Moving on to the next question. Write your understanding of gender differences in the use of language. Let's discuss the answer. Language दोनों ही men और women द्वारा यूज की जाती है, लेकिन ये मॉडिफाई और डिवाइड हो जाती है unknowingly between the male and female according to the social और cultural norms. जो डिफरेंस है लैंग्वेज के बीच में उसे क्लियरली मार्क किया जा सकता है. मेन और वुमेन आर सोशली, उनको सोशलाइज किया जाता है खुद को एक्सप्रेस करने में एक अप्रोप्रिएट सोशल लैंग्वेज के अनुसार, जो सिखाता है और रीइंफोर्स करता है डिफरेंशिएटेड जेंडर रोल्स को. ऑल्दो द लैंग्वेज स्पीकन बाय देम is similar like English or Hindi, but in the same language, because of using phrases, expressions, and annotations differently, the way of speaking changes. For example, everyone must do his duty. इस एग्जाम्पल में द प्रोनाउन हिज ऑल्सो इंक्लूड करता है विमेन को. द टाइटल मिसेस और मिस इंडिकेट करता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मैन को इन अ वुमेन्स लाइफ, जबकि मेन के लिए मिस्टर यूज किया जाता है जो इंडिपेंडेंट है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए विमेन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.